हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे हम इस पर्टिकुलर जॉब को कैसे क्रिएट करते हैं ना सॉलिडवर्क्स। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम डीएस पैरामीटर ओपन करेंगे, डीएस एंटर एंड आइसोमेट्रिक पे आइसोमेट्रिक स्नैप पे क्लिक करके देन ओके। जैसे ही हम आइसोमेट्रिक स्नैप ओपन करेंगे तो हमें जो माउस का पॉइंटर है वो हमें पर्टिकुलर एंगल शो कराएगा। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पे जो हमें डिज़ाइन दिया गया है उसकी जो हाइट है 75 mm एंड जो हमारी चौड़ाई है इस पर्टिकुलर जॉब की वो हमें दी है 87 mm। सो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइन एंड एंटर 75 और यहाँ पे जो चौड़ाई दी गई है हमें 86 mm एंड हम अपनी कर्सर की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं बाय प्रेसिंग F5। ओके, और जो हमारी जो लेंथ दी है हमें 120 mm दी गई है। जो हमें यहाँ पे लेंथ दी है 120। ओके, और हमें जो इसकी चौड़ाई दी है आउटसाइड वो है 15 + 15 + 30 दैट इज 60। सो हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करेंगे दिस एंड अप टू 60 mm और जो हमें इसकी हाइट दी हुई है यहाँ पे जैसे साइड व्यू फ्रंट व्यू में देख सकते हैं 45 mm। तो हमें यहाँ से डायरेक्शन चेंज करके 45 mm डाउन साइड एंड अगेन चेंज द डायरेक्शन एंड 15 mm और हम दी एंड पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे। Now copy this CO enter बेस पॉइंट देंगे और इस एंड पॉइंट पे क्लिक। Now again draw a line and enter, change the direction और merge this। जिसे हम कॉपी करेंगे एंटर, अगेन कॉपी बेस पॉइंट और change the direction and this, again press copy enter end point, this end point। जो हमारी स्ट्रक्चर है उसकी आउटर शेल तैयार हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना है 38 रेडियस के। ओके, तो सबसे पहले हम इसके सेंटर पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के लिए जो आइसोमेट्रिक व्यू होता है उसमें हम सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते। सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें इलिप्स कमांड का यूज़ करके आइसो सर्कल यूज़ करना पड़ता है। तो हमें इलिप्स कमांड करनी पड़ेगी EN एंटर एंड यहाँ पे आइसो सर्कल I एंटर और इसके मिड पॉइंट पे हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है 38 रेडियस का। ओके, trim the unwanted lines, TR turn enter this line। okay, according to drawing हमें इस कटआउट पोर्शन को ड्रॉ करना है।
जिसकी जिसकी डायमेंशन हमें यहाँ साइड व्यू पे दी गई है। तो जो हमारी लेंथ है इस कटआउट पोजीशन की, तो वो हमें दी गई है 15, 15 एंड 30। सो लेट्स ड्रॉ। तो हमें सबसे पहले सेंटर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। सेंटर लाइन ड्रॉ करने से अच्छा हम कॉपी करेंगे, कॉपी दिस लाइन और बेस पॉइंट देंगे सेंटर पॉइंट 60। ओके, अब इसे फिर से कॉपी करेंगे और जैसे हमें ड्राइंग पे दिखाया गया है कि जो ये कटआउट पोर्शन की जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में वो है 96 mm। तो 96 mm ड्रॉ करने से अच्छा हम इसे कॉपी करते हैं हाफ हाफ पोजीशन में। तो एंटर बेस पॉइंट देंगे और हाफ 96 का हाफ 48। ओके, 48 this side। okay, and copy again this line and this base point 48 this side। now delete this। according to drawing जो हमारी इस कटआउट पोजीशन की चौड़ाई है वो है 15 mm। so we simply copy these 4 lines। okay, copy, CO, enter this line, enter बेस पॉइंट दिया हमने और F5 डायरेक्शन चेंज कर दी 15। अगेन कॉपी दिस लाइन बेस पॉइंट 15 mm। अगेन कॉपी दिस लाइन बेस पॉइंट एंड 15 mm। अब हम सर्कल को कॉपी करेंगे, कॉपी दिस सर्कल up to change the direction। okay, 15। okay, again copy this circle base point on 30। again copy this circle base point and 15। हमें अब यहाँ पे लाइन क्रिएट करना पड़ेगा, लाइन merge these points। okay, confusion। सॉरी यहाँ पे हम इस एंड पॉइंट को हम मर्ज करेंगे। ओके, सो आई विल एंटर दिस एंड पॉइंट एंड दिस एंड पॉइंट। ओके, नाउ अगेन हियर L this and now trim unwanted lines। so TR double enter these two lines, these lines। okay, trim these। delete these lines।
Okay, now जो हमारी इस कट आउट पोर्शन की लेंथ है वो हमें 23 दी गई है, तो हम इस कट आउट पोर्शन को ड्रॉ करेंगे। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले टी आर दिस ऑल्सो change this also and make line command and डायरेक्शन चेंज करेंगे 23 डाउनवर्ड और ड्रैग दिस लाइन कमांड यूज करेंगे, डायरेक्शन चेंज एंड ओके। नाउ ट्रिम tr enter this, draw a line again this. Now जो हमारा कट आउट पोर्शन है वो तैयार हो चुका है। अकॉर्डिंग टू ड्राइंग हमें यहाँ पे एक और कट आउट पोर्शन तैयार करना है, जिसके हमें लेंथ दी है 60 और हाइट है 15। और इसकी जो चौड़ाई है वो 8 mm है। तो हम इसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले हम इस लाइन को कॉपी करेंगे, कॉपी एंटर 8 mm this side. Okay, now again हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने से अच्छा हम कॉपी करते हैं, कॉपी बेस पॉइंट और डायरेक्शन चेंज यहाँ पे 60 and copy this line up to 30 mm here and 30 mm here this side। हम इसे डिलीट करेंगे, ट्रिम this line okay। हम कॉपी करेंगे, सॉरी now line command F5 and direction 15 okay here इसके लाइन कमांड यूज करेंगे 15 mm and then change the direction okay। कॉपी करेंगे इस लाइन को and then base point change direction and give 60 mm। now line command this and again line this and trim tr
This is our diagram. Thank you.